Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSIR NET 2025. Today I will explain you how you can solve the calculus of variation problems. Myself Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various lectures on the mathematics CSIR NET and GATE examinations paper. All these lectures are available free of cost to you and fully shortcut tricks. Kindly watch and subscribe my YouTube channel. Now, the first question is your target is to find the value of the psi half from these extremers. So that's very simple. What is your given functional is y dash plus y double dash square. So can you write the Cauchy-Euler? Can you write the Euler equations, Euler-Lagrange equations? That is a partial derivative of the f with respect to y minus d over dx partial derivative of f with respect to y dash, because it involves the second derivative also. So I can write as a plus second derivative with respect to x of f y double dash. So now you can substitute the value. Partial derivative of f with respect to y, so y dash, minus partial derivative of the f with respect to y dash, it's a y, plus second derivative partial derivative of f with respect to y double dash, so it's a 2y double dash is equal to 0. Clearly say these two cancels, 2 will be cancelled out, so it's a fourth derivative will be 0. Once you know the fourth derivative is 0, that means the equation will be my cubic equation. Fine, ax square plus bx plus cx plus d. Is it okay? Now based on these equations and the initial conditions, you can find the value. Y of 0 is 0, that means d is equal to 0. Y of 1 is equal to 2, that means a plus b plus c is equal to 2. Y dash, so what is the y dash is 3ax square plus 2bx plus c. Y dash of 0 is equal to 1, that means 3a into 0 is a 0, 0, c is equal to 1. Y dash of 1 is equal to 4, 3a plus 2b plus c, c is equal to 1, which is equal to 4, that will be my 3. I can substitute the c is equal to 1 here, so that means a plus b is equal to 1. From these two equations, I can easily solve them. I can multiply this equation by 2 and subtract them. A will be 1, b will be 0. So therefore, your equations become x cube, b will be 0, c is 1, d is equal to 0. So your equation is x cube plus x. Is it fine? Now your target is to find the values at the value half. So that will be 1 over 8 plus 1 over 2. 8 will be the LCM, 1 plus 4, 5 over 8 is the right answer of the problem. That means A is my right answer of the problem. You can see that it's a very simple way. Also, you can see the more lecture in this playlist, calculus of variations. You can see the complete lectures, PY question series and the other lectures are available in this playlist. Okay, look at this second one. Consider the variation problem where y0 and y1 are free. What is the meaning of the free? That means partial derivative of the f with respect to y dash at the point x is equal to 0, which is equal to 0, and partial derivative of the f with respect to y dash at x is equal to 1 is also 0. What is your f? Y dash square 2025 y dash. So now let's start again with the Euler equations. Partial derivative of the f with respect to y minus dy dx partial derivative with respect to y dash, 2y dash plus 2025 of y is equal to 0. Clearly say this value will be cancelled out if you open this derivative. That implies twice second derivative is 0. So second derivative is 0. This implies equation is my linear. Is it okay? Now I can apply these conditions. So what is the partial derivative of f with respect to y dash? 2y dash plus 2025 of y. So I can substitute here at the point x0.
that will give you y dash of 0. Y dash of 0 plus 2025 of y of 0 is 0. For the second, at the point y1, it is y dash of 1, 2025 y of 1 is 0. Fine. Now you can substitute the value. What is the y dash of 0? From this case, y dash of 0 is my beta, y dash of 0 is alpha, so it is my twice of alpha. 2025 y of 0 is my beta. From the second equation, twice of alpha. 2025 y of 1, y of 1 is alpha plus beta is 0. Fine. Now if you open this bracket, clearly say it becomes 2026 alpha and it becomes only 2025 beta. Fine. Now if you solve them, what will happen? If you subtract them, clearly say alpha is 0, beta is 0. Once you get alpha and beta 0, what will be your solutions? Your solutions will be y of x is 0. Fine. So clearly say this is my unique extremal. Fine, because 0 is the only extremals, but you can see y of x is 0. It has multiple, or you can say infinitely many solutions. Solutions are infinite. Solution means your target is to find the value of the x, but the extremal means your target is to find the value of the y. So look at infinitely many extremals, that's strong. Infinitely many solutions, that's fine, but extremal is unique. More than one, but only the finite, that's strong. No extremal, that's strong. Unique extremals, that's the right answer of the problem. देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट सिंपल प्रोसीजर फॉलो करिए आप. उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे आप. Okay, look at this another one. It's a very simple questions. Many times in my previous lectures of these PY question series, PY on the calculus of variations, I already explained you how you can solve this part. Let S is the collection of all those continuously differentiable functions on the 0, 1 so that y of 0 is y of 1 is 0. Can you choose any of the y which satisfied this condition? Of course, you can think about sine of pi x, fine, or you can choose y is x into 1 minus x, fine. So choice on you, you can choose any one of them. But since my target is to get the answer in the 1 minute time periods, so any other, I can choose this answer also, y of x is 0. That also satisfied my these conditions, fine. So now I can choose y of x is my 0, fine. Now then B0 is the open sphere, open ball, V1 and so on. Now you can see y of 0. Can you find the value of the y of 0? Y0 means y is equal to 0. Y0 means y dash is my 0. So if you substitute in the given function y dash is 0, 0. So the answer is my 0. So the right hand side answers all are my zeros. Is it okay? Now look at the first option, B0, B0. What is a B0 is? Norm of y is less than epsilon. What does the meaning of this case? That means y, I can write this number is y minus 0 over the norm is less than epsilon. What does it mean? That means y is convergence to the 0. Fine. Y is convergent to the 0. Fine. Now, but you can see the given functional depends on the y dash, but the value of the B0 is independent of the y dash. B0 के अंदर तो y dash नहीं ना कहीं बताया, B1 में बता रखा है, that's fine. लेकिन हम पहला ऑप्शन करने जा रहे हैं B0 का, तो B0 के अंदर y dash कुछ नहीं बताया. इसका मतलब क्या है? y dash B0 के लिए कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, -71 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फाइन. तो यही तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है. दैट्स ओवर. तो इसका मतलब मैं y डैश कुछ भी अज्यूम कर लूं ओनली फॉर द B0. सो लेट्स से ऑन द वैल्यू ऑफ द B0 लेट y dash is my alpha. Fine.
अल्फा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा जीरो भी हो सकता है. सो देन कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द j of y? So it will be 1 to 0 alpha square minus 2x alpha raised to power 4. So can you integrate them? Its integration is alpha square minus x square, limits from the 0 to 1. So that will be alpha square common 1 minus alpha 4. Now alpha can be any number. If I choose alpha is my 0, then what is the value of the jy? Jy is 0, which is same as of j of 0. If I choose alpha is my any positive number, say 10. Now if I choose alpha is 10, so clearly say j of y will be negative. So that means which will be my less than of the j0. So but you can see the third option is j of y is greater than of the j0 on the b0. But if I choose alpha is my half, then this number will be my positive. Fine, then this number will be my greater than of the j of 0, but the first option said less than 0. So that means A and C options are cancelled out. ये ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आपने C ऑप्शन को कैंसिल कर दिया इसका ऑपोजिट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. फाइन, वो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. अगर किसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया होता तब तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होना था. फाइन, तब तो आपका ये नेगेटिव वाला ऑप्शन ही कैंसिल हो जाता पहले. चलिए अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर भी, ऑन द वैल्यू ऑफ द b1. अब b1 में क्या कह रहा है आपके पास? दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y माइनस वाई नॉट, y डैश माइनस वाई नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन. व्हाट डज इट मीन्स? y is convergence to the 0, y dash is also convergent to the 0. b0 में हमने क्या लिया था? b0 में y dash कुछ भी हो सकता था. y dash is my alpha. Alpha can be greater than 0, less than 0 or is equal to 0. But अब b1 में आपको क्या कह रहा है? y dash is also convergent to the 0. That means अगर मैं इस केस में भी y dash की वैल्यू को एक अल्फा ले लूं अपनी तरफ से, so that means alpha is very very near to the 0. फाइन, मैं फिर से j of y निकालता हूं. अगर मैंने अल्फा लिया फिर से वही इंटीग्रेशन आ जाएगी. फाइन, now you can see alpha is near to the 0, so this number is always the positive. फाइन, और 0 भी हो सकता है अगर आपकी अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाए. सो 0 क्या था आपका? तो इसका मतलब j of y is always greater than of the j0 on the range b1. तो लेकिन b ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, d ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. देखिए सॉल्व नहीं कुछ भी करना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जेंस कंडीशंस. सो द राइट आंसर इज डी. एक और क्वेश्चन करते हैं which is again the CSIR NET questions. Now you can see it is given that y of minus 1 is minus 1, y of 1 is equal to 3. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे दोनों वैल्यूज 0 के ऊपर थी तो हमने सीधा फंक्शन 0 ले लिया. फाइन, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 पे नहीं है और फंक्शन दिया हुआ है आपको -1 से 1 y डैश क्यूब प्लस y डैश स्क्वायर, और फिर से उसी तरह से आपको b0 और b1 दिया हुआ है. फाइन, तो पहले तो एक्सट्रीमल की बात करते हैं. गिवन दैट द फंक्शनल f y डैश क्यूब प्लस y डैश स्क्वायर, सो क्लियरली से दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y. जब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y होगा तो आपका सोल्यूशन क्या होता है? हमेशा ही अल्फा x प्लस बीटा, ऑलवेज. फाइन, so can you find the alpha and beta by using this condition? Y of minus 1 is minus 1 and y of 1 is equal to 3. So इन दोनों को सॉल्व करिए, मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो बीटा विल बी माई 1 और अल्फा मेरा हो गया 2. सो माई एक्सट्रीमल क्या हो जाएगा? y is equal to अल्फा x प्लस बीटा. फाइन, तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया. फाइन, चलिए अब बात करते हैं b0, b1 एंड b2. सो सबसे पहले b0 की बात करते हैं, इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे. b0 क्या कह रहा है आपका? y माइनस साई इज लेस देन एप्सिलॉन. दैट मीन्स y जो है वो किसको कन्वर्ट करेगा? साई को. साई मेरा कितना है? 2x प्लस 1. बट लेकिन ऑप्शन में तो y डैश चाहिए आपको गिवन फंक्शन में, और y डैश क्या होगा? कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स से y डैश इज अल्फा. और देखिए b0 के अंदर कहीं पे भी y डैश की कोई कंडीशन नहीं है.
तो अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है और इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो पहले मैं जे ऑफ वाई निकाल लेता हूँ इस अल्फा पे, -1 to 1 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस अल्फा। फाइन। और जे ऑफ साई भी चाहिए मेरे को, जे ऑफ साई भी निकाल लेता हूँ। साई मेरा कितना है, 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया आपका 12 24। इज इट ओके? नाउ अब अल्फा कुछ भी ले लो आप, एनी नंबर, से अल्फा इज माई से 0, नियर टू द 0 भी ले सकता हूँ, फाइन। नो, हाँ वाई डैश तो कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो वाई अगर अल्फा 0 होगा तो जे ऑफ वाई कितना हो गया आपका, जे ऑफ वाई 0 हो गया, और जे ऑफ साई कितना आपका 24। तो क्या रिलेशन हुआ, जे ऑफ साई इज ग्रेटर देन जे ऑफ वाई, बट बी 0 के ऊपर ये क्या कह रहा है, जे ऑफ साई इज लेस देन ऑफ द जे, सो सेकंड ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फाइन। चलिए अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर भी, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन B1। B1 में आपका क्या कह रहा है, y इज कन्वर्जेंट टू द साई, y डैश इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू द साई डैश। इसका मतलब अगर मैं y डैश को अल्फा ले रहा हूं तो साई डैश कितना है मेरा, साई डैश इज माई 2। फाइन, यही तो मैंने सोल्यूशन निकाला था ना साई का, 2x प्लस 1, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू नियर टू द 2 आएगी। फाइन, मतलब आप इसको 2.01 भी ले सकते हो, 1.9 कुछ भी ले सकते हो, नियर टू दैट 2। तो मैं फिर से वैल्यू निकाल देता हूं, जे ऑफ वाई कितना आया था मेरा, अल्फा ट्वाइस अल्फा स्क्वायर। फाइन, बट यहां पे एक गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, बिकॉज ये सोल्यूशन आपको 0 नहीं दिया हुआ, प्रीवियस एग्जाम्पल में 0 दिया हुआ था तो आपने सीधा उसको वाई ले लिया और अल्फा ले लिया, यहां एग्जैक्टली 0 नहीं दिया हुआ। फाइन, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको 0 बनाना पड़ेगा हमें। तो 0 कैसे बनाएंगे, गिवन सॉल्यूशन लीजिए जो आपका था, प्लस कोई भी एक अल्फा तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं सिंबल, एक फंक्शन ले लेते हैं g ऑफ x। इन दो की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नियर टू द 0, और gx के ऊपर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपकी इस इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू को सेटिस्फाइड करे, और सेकंड पॉइंट क्या था 1। इन दोनों की वैल्यू 1 और 3 नहीं आए लेकिन इनिशियल 0 है, तो क्या इन दोनों से कंडीशन बढ़ा सकते हो कुछ, एक्स स्क्वायर -1 ले सकते हो आप, साइन ऑफ पाई एक्स ले सकते हो आप, ओके, मोड एक्स -1 ले सकते हो आप, चॉइस आपकी है। तो लेकिन इजीएस्ट वे क्या है, एक्स स्क्वायर -1, तो मैं जी एक्स को ले लेता हूं एक्स स्क्वायर -1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा फंक्शन, 2x प्लस 1 ईटा टाइम्स एक्स स्क्वायर -1। फाइन, अब ये मेरा y है और साई तो मेरा फिक्स था पहले ही 2x प्लस 1। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे 0 कंडीशन नहीं थी इसलिए आपने पहले इसको कंडीशन बनाया आपने। अब आप इसका y डैश निकालिए, y डैश कितना हुआ, 2 प्लस 2 ईटा टाइम्स x। फाइन, जिसको मैं अल्फा कह रहा था। अब इसके ऊपर आप वैल्यू निकाल लेते हैं, ये y की कितनी आएगी, -1 से 1 y क्यूब, तो मैं इसको पहले मैं इसको क्या ले लेता हूँ, y डैश स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, 1 प्लस y डैश, तो मतलब 2 प्लस 2 ईटा एक्स स्क्वायर एंड 3 प्लस 2 ईटा एक्स। फाइन, अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको ओपन कर देते हैं, क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 3 12 प्लस, so you can open this 4 6 eta x, now 2ab 4 12 eta square x square, 4 2 या 8 eta square क्यूब हो जाएगा x 3 plus 2ab that's a 4 2ab that's a 8 8 3 या 24 and 8 2 is 16 eta square x square. Now you can see that it's from -1 to 1. This is the odd function. Answer is 0. Let me write here. Fine. So it will be, first one is at 12 is at 24 plus this is a 0, x cube 0. This is my 0. It is my x cube by 3. So that will be my 24 eta square by 3 plus this is again even function, so it's at 32
eta square by 3. Is it fine? Now, this is the value of the j of y. So can you find the value of the j of psi that we already computed in the previous one? That's a 24, because the value of the psi dash is my 2. So this value is my 8 plus 4, 12 into 24. Now clearly say this number is my always positive. So that means the value of the jy is always greater than of the j psi. Equal to भी हो सकता है जब आपका eta 0 ले लोगे आप. Fine. So that means it's a greater than. Third option is a correct. Fourth option is the wrong. A and C are my correct option. दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, डिफरेंस सिर्फ इतना है इनिशियल कंडीशन 0 पे. अगर 0 नहीं था तो पहले आपको 0 बनाना था. ओके, उसके बाद आप नॉर्मल प्रोसीजर पे मूव कर सकते हो. So this is the way you can solve the calculus of variation question in a simple manner. I hope you can share this video with your friends. I will come up with the next video very soon. Till then, don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck, students. Happy.